यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त स्कूल यहाँ पर जारी है। उसी की नज़ीर पेश करने के लिए इंग्लिश तकरीर के लिए मैं यहीं की एक तालिबा सादिया बिनते हाफिज़ सईद साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाकर अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। सादिया बिनते सईद। तुम जो ये वीडियो कर रहा हो ना, तो इसमें पूरा सीना बच्चे को बहुत ज़्यादा ऊंची दिख रही है, या तो फिर थोड़ा सा कैमरे को नीचे करो तो पूरा जब बच्ची खड़ी होती है तो आगे जाके ना पूरी जरा से दिख रही है स्टेज। थोड़ा स्टेज लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब बच्ची बहुत ज़्यादा दिख रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला आलिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अव बिल वालिदैनि वल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। Honorable guests, respected teachers and all my class fellows, today on this auspicious occasion, I have been called to speak some humble words about the concept of justice in Islam. I hope you will listen my speech carefully. Dear audience, justice is very important in the sight of Almighty Allah Subhanahu wa Taala and His beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because Allah is just and He wants justice. According to the Holy Quran, establishing of justice is one of the essential goals for sending the prophets and revealing the divine scripture. The Holy Quran teaches us that justice is supreme virtue and it should be done in every condition. That's why Almighty Allah Subhanahu wa Taala mentioned this topic not in one place but 7 places of the Holy Quran. Almighty Allah Subhanahu wa Taala commands Muslims to just with their friends, parents, relatives, even themselves. Allah Subhanahu wa Taala says in Surah An-Nisa verse number 135. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. O you believers, stand out formally for justice as business to Allah, even if to be against yourself or your parents or relatives, or whether it is against the rich or poor. Dear audience, justice should not be done only with Muslims, but Almighty Allah Subhanahu wa Taala commands us to maintain justice and transparency with non-Muslims also. Allah Subhanahu wa Taala says in Surah Mumtahina verse number 8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. And Allah does not forbid you as regards those who did not fight you on account of faith and did not expel you from your home, that you do good to them and deal justly with them. Surely Allah loves those who maintain justice. Brother and sister in Islam, in the light of these verses, you might have known that how much importance of justice in the sight of Allah. But in spite of that, if anyone doesn't maintain justice, Allah Subhanahu wa Taala says for him in Surah Jinn verse number 15, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. As for those who ever injustice, they are firewood for hell. Dear audience, in Islam, justice is not only a moral virtue, but it is more rewardable act, as it is reported that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, there are 7 categories of the people whom Allah will shelter under His shade on the day of judgment, when there will be no shade except His. One of them is a just leader. In another hadith, Allah spoke to His messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam about justice. O my slave, I have forbidden injustice for myself and forbid it also for you, avoiding injustice to one another. Dear audience, Islam guides Muslims to hold justice and fairness with people in every condition, and Muslims must avoid injustice because injustice destroys the peace of humanity and it's impossible to find peace without establishing justice. My dear audience, now I am going to wind up my speech. Pray to God that may Allah give us tawfiq to maintain justice in our life and in our society. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
माशाअल्लाह। ये इस तालिबा के भाई की तरफ से, हाफिज साहब की तरफ से इस बच्ची को इनाम आया है। अल्लाह ताला के देने को कबूल फरमाए। अब इसके बाद में उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मेमूना बिनते मुफ्ती से वक़तुल्लाह साहब बकायन वाले, उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाकर अपनी तकरीर मुस्लिम पर्सनल एक तारुफ पेश फरमाए। मेमूना बिनते